Hello students. So today we are going to come up with the strategy to prepare for board exams. बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, बहुत ही नजदीक हैं। 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, 12th कॉमर्स सीबीएसई के। डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट्स यू हैव ऑप्टेड, अलग अलग डेट्स को बोर्ड एग्जाम्स होंगे। अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम जो है वो है 25 फरवरी को, तो हार्डली 1 मंथ, थोड़ा उससे कम बचा हुआ है। ये वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट? आई विल बी गाइडिंग यू अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम इन एग्जाम्स, which questions how much time to devote, 1 mark questions how much time to devote, 3 marks questions, 4 marks questions, 6 marks questions, how much time to devote, so that you are able to complete your paper on time, as well as at the end कुछ टाइम बचे कि आप जो क्वेश्चंस अनसॉल्व है उनको भी वापस जाके सॉल्व कर सके या अपने कैलकुलेशंस दोबारा से देख सके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न का भी गाइडेंस दूंगा, टाइम मैनेजमेंट का भी गाइडेंस दूंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है, 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, 6 मार्क में कौन से चैप्टर्स एक्सपेक्टेड है। तो आप अपना एक प्लानर बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन प्लानर वेयर यू कैन प्रायोरिटाइज कि यू फर्स्ट प्रिपेयर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर गोइंग टू हैव मोर वेटेज इन बोर्ड एग्जाम्स, and then you go in for those chapters which are going to have lesser weightage. तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। आई एम 100% श्योर ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा टू प्रिपेयर पर्टिकुलरली फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। टू बिगिन विद, सबसे पहले वी डिस्कस विद पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो पार्ट ए, from accounting for partnership firms and companies, volume 1 and 2, which all questions are expected. See, question 1 to 16 टोटल आपके 34 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में रहेंगे क्वेश्चंस 1 to 16, 1 मार्क ईच, जिसमें आपको 45 मिनट्स डिवोट करना है। नाउ सी, दीज 1 मार्क क्वेश्चंस आर 16 इन नंबर, डजंट मीन्स के वो 15-16 मिनट में हो जाएंगे। Actually, some 1 mark questions are very tricky to solve. As you always say, valuable things come in small packages. तो वेटेज तो 1 मार्क है, पर उसके लिए आपको वर्किंग्स, कैलकुलेशंस काफी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू स्मार्ट कैलकुलेशंस, बिकॉज वो 1 मार्क में कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। नो फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड, ओनली करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड। नाउ वन थिंग यू कीप इन माइंड, जब भी आप एमसीक्यू का आंसर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आप ऑप्शन भी लिखिए और आंसर भी लिखिए। खाली ऑप्शन ए मत लिख के आइए। जस्ट डोंट राइट ऑप्शन बी और सी और डी। along with option A you mention the answer is the revaluation account, along with option B you mention the answer 10,000 is the answer. So you mention the option as well as the answer, and 3 minutes per question, because calculative questions will also be there. Some questions might require more time, but some might require lesser time also, जो purely theoretical होंगे। रीड किया, 2 सेकंड में आंसर किया, यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑन एन एवरेज 3 minutes per question कंसिडर करके फर्स्ट 16 क्वेश्चंस मस्ट बी ओवर इन रफली 45 minutes ऑफ टाइम। उसके बाद में 17 to 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 3 marks वेटेज ईच। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चंस 3 marks के वेटेज के होंगे, टोटल 12 marks का वेटेज। यू डिवोट 5 minutes approximately per question. Per question, if you devote 5 minutes, then 4 questions, 17, 18, 19, 20 will require 20 minutes. So 3 to 5 minutes approximate करके आप उसको 15 minutes में finish करने का target रखिए। You keep the watch on your desk and time management constantly देखते रहिए, otherwise your paper will not be over in 3 hours period of time. So target is that these 4 questions of 3 marks must be over in maximum 15 minutes. Approximately 4 to 5 minutes you devote per question. 21 and 22, 2 questions will be of 4 marks each,
and 7.5 minute per question is what you have to devote. So total 15 minutes में आपको question 21 and 22 को finish करना है. Now from which chapter these questions will be asked वो मैं आपको guidance दूंगा in the further slides, and in the further video you'll be coming across the questions which will be asked for 3 marks and 4 marks, but 7.5 minute per question. Question 23, 24, 25, 26 will be of 6 marks weightage each. These are the long questions. ये बड़े questions हैं. Admission, retirement, share capital, इन सब chapters से आएंगे. That we'll see later on. Now here you have to devote approximately 1 hour. 4 questions means 15 minutes per question of 6 marks. 15 minutes per question of 6 marks in 1 hour. You must be able to finish 4 questions. So entire आपका जो part A है 1 to 26 questions. Majority out of 34 questions, 26 are in part A from volume 1 and 2. वो आपको finish करना है 2 hour and 15 minutes में. You can see 45 minutes plus 15 minutes 1 hour, then again 15 minutes and 1 hour. So 2 hour 15 minutes में आपका part A complete हो जाना चाहिए. And part A का weightage भी अच्छा खासा है 60 marks. So 60 marks के लिए आपको 2 hour 15 minutes तो devote करने ही पड़ेंगे. Going further, now part B will be from volume 3, from analysis of financial statements. So question 27 to 30, 4 questions, 27, 28, 29, 30, 1 mark each पूछेंगे, and पिछली बार 3 minutes per question रखा था, so roughly 2.5 minutes per question, because यहाँ पे calculative बहुत नहीं होंगे. In volume 3 calculative questions are not there, so maybe these 4 questions you are able to finish in 5 minutes also. Safer side एक आध दो calculative आ भी गए तो considering 2.5 minutes time per minute per question, you must be able to finish these 4 questions in 10 minutes. 31 and 32 will be of 3 marks each. Okay, 5 minutes per question, 2 question है, 10 minutes devote करना है. 33rd question, single question will be of 4 minutes, and 3 and 4 marks weightage में बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है type of question में. So as 3 marks require 5 minutes, even 4 marks will require 5 minutes per question only. And last question 34 will be of 6 marks. This will be from cash flow statement. तो उसमें आपको 10 to 15 minutes devote करना है. So total जो आपका है 2 hour 50 minutes में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा. If you go with this time management, still you will be left out with 10 minutes for rechecking everything at the end of the. So students, हमने देख लिया है कि टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न दोनों साथ ही देख लिया है. कौन से क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, कौन से 3 मार्क्स के आएंगे, कौन से 4 मार्क्स के आएंगे, एंड किस पे कितना टाइम डिवोट करना है. नाउ वी गो फर्दर कि 1 मार्क में कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में एंड 6 मार्क्स में. सो गोइंग फर्दर, 1 mark questions. Now in part A you are going to have 16 questions of 1 mark, and in part B you are going to have 4 questions of 1 mark. Means 1 mark के question का total weightage है 20 marks. Now you understand this, these are MCQ questions. Out of 80 marks paper, 20 marks तो खाली MCQ है, जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है if you prepare the things very well. तो ये कौन से चैप्टर्स से एक्सपेक्टेड है. 1 mark minimum 1 MCQ is expected from all the chapters. ये तो पक्का है, हर चैप्टर में से एक MCQ तो आएगा ही आएगा. 16 questions are to be asked. चैप्टर्स कितने आपके, वॉल्यूम 1 के अंदर आपके 6-7 चैप्टर्स है, वॉल्यूम 2 के अंदर आपके 2 चैप्टर्स है, 8 to 9 चैप्टर्स टोटल आपको प्रिपेयर करने हैं. सो हर चैप्टर में से मिनिमम 1 मार्क तो आएगा ही आएगा. मीन्स यू विल गेट 1 क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम, उसमें से ज्यादा आएंगे, दैट विल सी फर्दर. गुडविल, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस, कैश फ्लो रेशियो, सब में से एक एक मार्क का मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नाउ फर्दर हाउ डू यू एक्सपेक्ट द थिंग्स. Maximum 1 mark questions are going to be asked from partnership volume 1 chapter 1. 4 to 6 MCQs will come from single chapter partnership. 4 to 6 MCQs will come. मतलब see, ये आपको अब स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है कि पार्टनरशिप में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड नहीं है, विच आई गाइड यू फर्दर, 4 मार्क्स का एक्सपेक्टेड नहीं है,
1 मार्क के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स एक्सेट्रा. जो पास्ट एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है. यू गोइंग फॉर सिंपल कैलकुलेशंस. क्या क्या पूछ सकते हैं 1 मार्क में. दे कैन आस्क यू थियोरेटिकल क्वेश्चंस, पार्टनरशिप डीड बेस्ड क्वेश्चंस. दे कैन आस्क यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. गारंटीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक क्वेश्चन होगा ही होगा. गारंटी गिवन टू अनदर पार्टनर, जिसके कैलकुलेशंस करके आपको आंसर फटाफट देना है. Then interest on capital and some error questions are possible. So all these questions are possible for 1 mark. But there will be 4 to 6 MCQs that are possible for 1 mark from single chapter 1. उसके बाद में 2 MCQs will come either from admission or retirement, or maybe one from each of them. So admission retirement में भी small questions थोड़े जो है आप theoretical के prepare कर लीजिए, plus how to find the new ratio. Then goodwill entries will be given. From that you find the sacrifice ratio, थोड़ा twist करके उल्टा पुल्टा जाके. So those kind of questions you can be asked from admission and retirement. 3 to 5 MCQs will come from share capital. मतलब partnership 4 to 6, share capital 3 to 5. Means you can say 9 to 11 questions out of 16 will come from these 2 chapters only. बाकी सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे. So 9 to 11 questions will come from these 2 chapters. मतलब शेयर कैपिटल में छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक 4 फीचर फाइंड करके कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है. Then how to find the maximum amount that can be given as discount at the time of reissue. Then share 4 feature is transferred to which account. Theoretical questions. ASBA का full form पूछ सकते हैं. So private subscription, IPO. So you prepare thoroughly well theory also from this particular chapter, but 3 to 5 MCQs will definitely come from share capital. So from volume 1, these all are expected, and from volume 2, cash flow statement itself, you are going to get 2 MCQs from that. So from 20 marks, you can expect that if you prepare these chapters thoroughly well, partnership, share capital, admission, retirement, and कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. 13. यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 11 क्वेश्चंस फ्रॉम अबव चैप्टर्स इन पार्ट ए एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ कैश फ्लो इन पार्ट बी. मींस 12 to 13 questions will come from only 4 chapters. Which 4? Partnership, admission, retirement, share capital, cash flow. These 4 chapters will have 12 to 13 MCQs in your board exams. So from all these chapters, small 1 mark questions, calculation based, अच्छे से prepare कर लो. From the rest of the chapters, approximately 1 question of 1 mark each is expected. Now after 1 mark, 3 marks questions. What is the weightage? 4 questions in part A and 2 in part B. So 6 questions will be there for 3 marks. Total weightage of 18 marks is going to be there. 6 questions. कौन से चैप्टर से एक्सपेक्टेड है? फ्रॉम पार्ट ए 3 marks questions are expected from partnership. Partnership से 3 marks का आएगा. Again 3 marks means you understand that very complicated questions of past adjustments will not be asked, because in T.S. Garewal and some reference books very complicated questions are also included. You just prepare basic questions and go. चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस आपको आना चाहिए कि अगर लॉस है एंड इट इज एन एप्रोप्रिएशन, देन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो सब माइन्यूट पॉइंट्स थोड़े बहुत आपको आने चाहिए. यस, बट पीएलएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks. देन फ्रॉम गुडविल यू हैव 3 marks क्वेश्चन. बम्पर, सुपर, लॉटरी. गुडविल जैसा इजी चैप्टर तो पूरे बुक में है ही नहीं, तो ये 3 mark तो पूरे अपने पॉकेट में कर लो. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछते नहीं है. बेसिक एडजस्टमेंट्स पूछेंगे, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, देन एबनॉर्मल लॉस आ गया, एबनॉर्मल गेन आ गया, या फिर थोड़े बहुत प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर्स को इधर उधर गलती से रिकॉर्ड कर दिया है. सो यू थरली प्रिपेयर द फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज, सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स एंड फ्यू टिपिकल एडजस्टमेंट्स. बट वेरी स्कोरिंग 3 marks का एक गुडविल में से आएगा ही आएगा. Then 1 question will be there from reconstitution of partnership. Again very simple. Reconstitution में है क्या? Change in profit sharing ratio. You'll be asked few questions where you have to distribute the reserves between the partners, or they'll just ask you to make revaluation account and find the profit or loss on revaluation. Some complicated adjustments of revaluation will be given. So
reconstitution, change in profit sharing ratio, 3 marks question is expected, and from retirement. So 4 questions in part A. You'll have questions from partnership, goodwill, reconstitution, and retirement. And share capital. These are 5. So out of these 5, any 4 can be expected. Safer side, you prepare these 5 chapters from 3 marks questions point of view. Generally, share capital और debenture के बीच में option आता है for 3 marks. For 3 marks question, they give you 1 question of share capital. In option, they would give you 1 question of debentures. So debentures आप थोड़ा बहुत option में छोड़ दोगे तो चलेगा. Because share capital you'll have to prepare, that I'll tell you later. Share capital को आप option में नहीं छोड़ सकते. So share capital you'll have to prepare क्योंकि उसका weightage बहुत ही भारी है. Debentures को आप prepare करिए, but from 3 or 4 marks question point of view only. Now from part B, you'll have 3 marks questions from financial statement, analysis, and ratio. Any 2 will come from any of these 3 chapters. Finance means cash flow will not come for 3 marks or 4 marks. For 3 marks, what will come from volume 3 is either financial statement or analysis or ratios. So either of the chapters you can prepare. Okay. So from 3 marks point of view, आप लोग सब ये note कर लीजिए कौन से chapters prepare करना है. Going further, 4 marks questions. Now, what is the total weightage? 2 questions in part A and 1 in part B. So 12 marks is the total weightage of 4 marks questions. Now, from which chapter these are expected? From part A, 4 marks questions are expected from death, dissolution, and share capital. 2 questions. So generally, death or dissolution, any one chapter they'll ask you 4 mark question. Either they'll ask you a question on death or on dissolution. Okay. Now dissolution means वो few journal entries पूछ सकते हैं, पूरा का पूरा process नहीं पूछेंगे शायद. They will give you maybe 3-4 journal entries and you pass the journal entries at the time of realization, including realization and partners capital account. They may ask you a small question to make realization account and find profit or loss on dissolution. But most probably what is expected is journal entries based questions. Okay. And death of partner में से they'll ask you to make executors account. So how to make that executors account, and after that loan के chances बहुत कम है. Mostly they'll ask you to make executors account. Share capital में से 4 marks का question compulsory. It is definitely going to be asked from share capital. That's why I told you earlier also, share capital you will not be able to leave in option, because 1 mark में 3 to 5 MCQs, 3 mark also it is expected, 4 marks also it is expected. From part B, 4 marks questions are expected from analysis or ratios. Either from analysis or from ratios. Financial statement से नहीं आएगा क्योंकि उसमें 3 marks, 4 marks का कुछ बनता ही नहीं है. So either from analysis and more chances of ratios. 4 marks more chances के वो ratios में से ही पूछेंगे. So you prepare these chapter thoroughly well from 4 marks point of view. And 6 marks. Now, total you'll have 4 questions in part A and 1 in part B. 30 marks out of 80 is the weightage of 6 marks. MCQ पे ध्यान दे दो, 6 marks पे ध्यान दे दो. 30 plus 16, 46 marks तो आपका यहीं पे cover हो जाएगा. Now, from which chapters 6 marks are expected? From part A, 6 marks questions are expected from admission or retirement. Option मिलेगा दोनों के अंदर. Exam में भी mostly. So I will advise you that you go in for admission of partner. Admission of partner को priority पे prepare कर लो, because retirement वैसे तो easy है, but in retirement if they ask you loan account and capital में so many multiple situations are possible. And generally in 6 marks when they ask you a question of admission or retirement, they'll ask you either journal entries or they will ask you to make revaluation account and partners capital account. Balance sheet is not expected. I repeat, balance sheet is not expected. तो ये आप ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट जनरली आने के चांसेस नहीं है. रिटायरमेंट के बदले एडमिशन विल बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज अदर प्लेसेस आल्सो वेयर हाउ somehow for 3 and 4 marks also admission of partner is expected. Then next you will have a question from either death or dissolution. Now see, 4 marks में भी death और dissolution आ सकता है. तो 4 marks में death पूछा तो 6 marks में dissolution पूछेंगे. 4 marks में dissolution पूछा तो 6 marks में death पूछेंगे. तो when you are preparing death and dissolution from 4 or 6 marks point of view, दोनों का आपका ऑप्शन कवर हो जाएगा. शेयर कैपिटल में से कंपलसरी 6 marks का आएगा along with option of share capital itself. Means share capital will come in option with share capital. 2 questions will come.
So share capital is a very important chapter. You'll find that in every weightage of mark, 1 mark, 3 marks, 4 marks, 6 marks, everywhere it is included. And one question will come from debentures. So debentures you have to directly prepare mainly from 6 marks point of view only. In other places you can prepare share capital very well. And from part B, what is expected is 6 marks questions will definitely come from cash flow statement only. From volume 3, in part B, 6 marks question will come only from cash flow statement. बहुत ज़्यादा difficult नहीं पूछते, but you must know how to make the workings of machinery account to find or fixed assets account to find missing figure of purchases, accumulated depreciation option के साथ में. बाकी very complicated way to make provision for tax account and proposed dividend account and so on are not asked. But at the most you prepare the workings of fixed asset and accumulated depreciation thoroughly well. So वो 6 marks में cover हो जाएगा. Now, we have seen from which chapters you are going to be asked questions of 1 mark, 3 mark, 4 marks, 6 marks. अच्छा, इसके साथ I want to make one important announcement also that very soon in a day or so we are also coming up with crash course sessions of CBSE. Means जो ये important chapters मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसको हम crash course में cover करेंगे. So out of 80 marks in our sessions, we will help you to prepare almost 40 to 50 marks questions. I'll tell you later which chapters we are going to cover. Now, which are the most important chapters from this paper pattern point of view? Admission cum retirement. Why? From admission cum retirement, questions of almost 11 to 12 marks are expected. 6 marks will come from admission cum retirement. दोनों में option आएगा. ठीक है? So 6 marks question. 2 MCQs, 8 marks. And either in 3 marks or in 4 marks, you'll have one question from admission or retirement. So 11 to 12 marks questions are expected from admission and retirement. तो ये दोनों चैप्टर को प्रायोरिटी में पहले प्रिपेयर करो. Dissolution. From dissolution, questions of 10 to 11 marks are expected. Dissolution, death. Okay, it depends on your luck now, which one comes. But dissolution, again 10 to 11 marks, including MCQs, 1 mark, 3 mark, 4 mark, and 6 marks weightage. Share capital, the most important chapter. What is the weightage of share capital? 16 to 18 marks, single chapter. Because it has questions of 1 mark, 3 mark, 4 marks, 6 marks each. हर जगह पे share capital, it's omnipresent. Every weightage of question in board exams, one question of share capital is present. It's an omnipresent question. तो उसको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करो. एक ही चैप्टर में 16 to 18 मार्क्स आपके आ जाएंगे. And cash flow statement. The weightage will be 8 marks, 6 marks question will come, and 1 mark, 2 1-line MCQ questions will come. So 8 marks will be the weightage of this cash flow statement. From above chapters, you have almost 45 to 48 marks weightage in your board exams. 80 marks में से 60% weightage is of only 1, 2, 3, 4 chapters which you prepare. And these chapters we are going to cover in the upcoming live sessions. Sorry, not live sessions, crash course sessions. So आप देखिएगा 3 से 4 सेशन एक चैप्टर के होंगे, and that 3 to 4 sessions per chapter will help you to score all these around 46 to 48 marks. Now, accounts paper में थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है. Generally, it is lengthy and needs perfect presentation. So, I'll guide you some tips and guidance I'll give you, which minute things you take care of when you go for accounts paper. 1. Attend the questions in order only from 1 to 34. Order को बेटा change मत करो, क्योंकि examiner का एक frame of mind होता है. When he is checking the paper, suddenly he has to check admission, so he has to turn pages in the solution. He has to compare with that. Then he comes back to question number 2. So it is advised that you go in the order of questions from 1 to 34 only. And in between, you go as per the time management I advise you. You leave the space if you are not sure about any particular question. उसका उतना approximate space छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ. So this is very important that you attend in the order only. For 3, 4 and 6 marks questions, make proper formats with scale, pencil, give proper headings.
जर्नल एंट्री भी है तो हेडिंग दो बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स, name of the company in case of share capital. Within the journal, write the narrations in bracket, brief narrations, short and sweet narrations. Totals है तो about total 1 line, below total 2 lines. So blue pen and pencil is only to be used. Black pen and other color pens are not allowed. But with blue pen and pencil, you can do lots of creative things in your presentation. So take care that you make proper presentation in accountancy. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे तो डेबिट क्रेडिट लिखो टॉप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखो. सो टेक केयर ऑफ दीज माइन्यूट थिंग्स इन फॉर्मेट. For 1 mark questions, do smart calculations. Here proper formats are not required. Don't waste time in formatting. So 1 mark question आता है तो स्मार्ट कैलकुलेशंस पहले से ट्रिक्स सोच के रखो, प्रिपेयर करके रखो कि ये 1 mark का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आया तो हाउ कैन आई कैलकुलेट विदाउट गोइंग and showing the calculations in detail. Okay. Now, for any journal entry questions, make proper format and give proper endings and do totals also. Always keep a watch on the table or desk and keep watching the time after every question. देखो कितना टाइम करना था डिवोट, 1 mark पे 3 marks, 3 minutes हो गया complete. After 16 questions, is it over in 45 minutes? After 3 marks question, is 1 hour over? So constantly keep on looking at the time so that you know how much time is available at your disposal and you're not devoting unnecessarily extra time. Don't waste your time looking here and there कि भाई बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं. Don't be under stress कि वो बहुत बराबर फटाफट लिख रहा है, मतलब he is taking so many supplementaries, I am not able to. It's okay. His handwriting may be bigger, your may be smaller. During board exams, just concentrate on your paper only. Don't see what others are doing. Once paper is over, then finish the left out questions with whatever you know. खाली मत छोड़ के. एग्जामिनर की कृपा से हाफ मार्क भी मिल गया तो आपके मार्क्स में ऐड ही होगा. एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द 34 क्वेश्चंस एंड रीचेक द कैलकुलेशंस एंड फॉर्मेट्स. कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक भी निकलती है. सो व्हेनेवर पॉसिबल, इफ यू आर लेफ्ट आउट विद द टाइम, डोंट सिट आइडल, रीचेक योर कैलकुलेशंस. So finally, we wish you all the best for your upcoming board exams. एक और चीज बेटा, 20-25 दिन बाकी आपके बोर्ड एग्जाम्स में. सो अभी से एक स्लीप पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर दीजिए. Means your board exams in the morning is in the morning from 10:30 to 1:30, 10:15 to 10:30, 15 minutes आपको रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा. So if you work back the calculations, those who have habit of studying late night should change your habit right now, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे वो हैबिट चेंज नहीं हो पाएगी. एग्जाम के टाइम पे नींद आएगी. सो बी अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली एंड स्टडी. भले ही आप अभी नहीं भी हो तो थोड़ा हैबिट को चेंज करो ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे दिक्कत ना हो. See that you go to bed by latest 10:30 or 11 a.m. and you can wake up at 4 a.m. or 5 a.m. and start studying. During board exams, you wake up at 6 a.m. बहुत जल्दी मत उठो. एक हफ्ते का गैप होता है एग्जाम में, पहले से पढ़ के रखो. बोर्ड एग्जाम के दिन नींद पूरी करके जाओ. 6 a.m. के करीब उठ जाओ. You have proper breakfast, etc. Before leaving for exams, don't study too much, don't revise too much. Brief summary पहले से बना के रखो, उसको revise करके रखो, so that last moment पे tension ना आए. And after the papers, don't discuss it. Prepare for the next exams. So we wish you all the best for your upcoming board exams. And remember, ये जो last के मैंने important chapters बताए, admission, dissolution, share capital, cash flow statement, we are going to come up with a crash course session of all these 4 topics on our YouTube channel. Do subscribe to our channel, like our channel, share it with your friends. They will also definitely get lots of benefit from this. Bye everyone. Take care. See you.